Today, I plan to discuss another strategy of reading development. Very important strategy, and that strategy is called reading development. Reading development through storytelling. We have discussed that we have many strategies by which we can improve students' phonemic awareness. If you remember yesterday or day before yesterday or the previous class, we thoroughly discussed 3 or 4 different phonemic awareness strategies like phoneme identification, phoneme segmentation, phoneme isolation. So those strategies were directly associated with phonemic awareness. Now, if we talk about the overall reading development, storytelling is one of the important strategies, experts have said, because storytelling enables you to intervene students' reading development program. But before telling the advantages and the merits of the storytelling, it would be a better idea to discuss different type of content we usually use in storytelling. Because when we use storybooks, we actually deal with text, content. So there are 2 types of content. Number 1 is the fiction text. Fiction text. And the second one is non-fiction text. Tell me something about your initial knowledge about these 2 terminologies of 2 words like fiction and non-fiction. Yes, please go ahead. What do you mean by fiction? Fiction, Indian Mahabharata, और non-fiction थोड़ा reality based थोड़ा नहीं. It's all about non-fiction text means the text belongs to the reality. Remember another important thing. Whenever you use storytelling strategies, you actually discuss about what happened in past. Story itself tells what happened in past. So we use 2 types of text, fiction and non-fiction. Fiction text refers to all those texts based on imagination. Imagination means that event or that thing or that particular everything doesn't exist. You created that. You created that. And non-fiction means what happened in past. It could be event, it could be anything, it could be a story of someone, a biography of someone based on reality. And sometimes it's possible to reality exist in our fiction. Fiction में reality exist करती है. Fiction में नहीं करती. Example. Suppose I read. Imagine that I am a student and I am reading a book in which I am reading that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah at 571 AD.
he grew there in Makkah. When he reached at the age of 40, he was chosen by the Almighty as his last prophet. He left Makkah and went to Medina. I read all this text based on reality. Because yes, it is a reality. It happened. Okay? So this is a typical, this could be an example of non-fiction text. Now, come to the fiction text example. Now I am telling a story or I am reading a story. Suppose I open a book and start to read out. Once upon a time, there was a jungle. There were many animals there. But as we know, the lion is considered as the king of the jungle because he belongs to the carnivore family. You know that. One day, he thought that he feels hungry. Suddenly, he decided to go inside the jungle and to search prey. I created this text. It never happened. You can say that, sir. Jungle is a reality. Lion is also a reality. So, and there are many other herbivores, carnivores, omnivores live there. So how you can say that this text belongs to the fiction text? Okay? Your objection is very much pertinent. Now, let's try to understand fiction text with the help of another example. टार्ज़न की कहानी, टार्ज़न की वापसी। टार्ज़न ने सोचा आज वो जंगल में जाएगा, सारे जानवर जमा हो गए। अरे भाई, who saw Tarzan? Have you ever met Tarzan? Cartoons, Pink Panther, Superman, all fiction. Have you ever seen fiction movies? Fiction. Creation of a writer. The first writer wrote that film, that plot of the film, and the producer actually produced that film. Fiction. Now understand what is the difference between fiction and non-fiction type of text. Okay. Now the question raised that which type of text is suitable for storytelling as far as the reading development is concerned. I'm waiting for your response. Yes, miss. If you say fiction, then why? Why non-fiction? Why reality-based text is not suitable? Okay, not only we can create fantasies, but to create interest of the students. How we can create fantasy and interest of the students? Now the next question. The next question. That is established, yes. We can create fantasy interest for the students. We change the voice according to the character. No, let me say. Let me ask you another question. How we can create fantasy? तो उसमें बहुत सारे fictionary characters ला सकते हैं. The only reasonable answer of this question is we have a freedom. Because some things never happen and we are trying to make it happen. So we have complete freedom. We can write whatever we want to write. Our objective is to create fantasy and interest. बच्चे होते हैं उनके सामने बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि reality
had another question, but you prematurely asked that question. Now, let's start from right from the word. We understood what is the difference between fiction and non-fiction text, what is fiction and non-fiction text, and what is the difference between fiction and non-fiction text. Then we discussed that usually fiction text is more suitable than non-fiction text because we can create that text, and if we can create that text, we can easily make it full of fantasy and full of interest. Okay? Now, the next question we discussed, how we can create fantasy and interest of the students in the text, because we have a total freedom, because nothing happened and we are insisting that that is happening. So the next question is, although we have a complete freedom to write any story, but we will have to care about an important thing. And that thing, what your colleague mentioned, that don't tell each and everything. Only tell students those things which exist in his environment. यार आप बच्चों को कहीं फ्रीडम की वजह से कुछ ऐसी कहानी ना दिखा दें जो उसकी एनवायरनमेंट में नहीं है, उसके एनवायरनमेंट में वो चीजें होनी चाहिए. जो किरदार, वो you have chosen 5 or 6 characters in the story. All those characters must be the part of his environment. Otherwise, it won't work. Won't work. Believe me. Birds. अब ऐसे बर्ड्स नहीं आप उसमें इंक्लूड करेंगे उस स्टोरी में जो उसके एनवायरनमेंट में नजर नहीं आ रही. उसका फेमिलियर होना बड़ा जरूरी है. अदरवाइज वो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट चीजें हो जाएंगी, चीजें कॉन्क्रीट डालनी है. ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? हम फिक्शन टेक्स्ट को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अपनी मर्जी से उसको, और ओवरऑल रीडिंग डेवलपमेंट में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है. फॉर इंस्टेंस, being a literacy teacher, this is my task because I have done very enthusiastically with the students about their phonemic awareness development. You know that what is phonemic awareness? The 26 letters of the English alphabet is called phonemic awareness. They are spoken sound of the written text. Written text here means the shapes and symbols of the sounds. A, B, C is the name. I worked hard with the students, and now it's time to know whether the students are capable to pronounce the relative sounds of the English alphabet letters or not. And to use fiction text by knowing this type of capability of the students. So let me write a sentence, a single sentence which enable me to know whether the students are aware about phonemic awareness or not. So, I made one sentence. Why? All 26 letters are used. Exactly. All 26 English alphabet letters are available in this sentence. So whenever I instruct any students, please read out loudly. Quick brown fox jumps. Hold on. Don't try to stress your mouth as much as you are doing. Simply read out this sentence. A quick brown fox jumps over the lazy dog. A quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay? So I can easily get the knowledge of the student's capability about phonemic awareness.
freedom because I used fiction text. I never saw a fox who jumped ever. I did not see any fox who jumps over the lizard. Dog and fox is totally my imagination. But it isn't important that a fox is going to jump over the lazy dog. That is not an objective. The objective behind this activity is to know the all 26 phonemic sounds. So I have freedom and I made this sentence. Are you getting what I am trying to say? This sentence, the character involved in this sentence, the dog and the fox, the characteristic of fox is quick, she is very quick, and the color of the fox is brown. That is not a matter of discussion. The objective was to know students whether they are capable to read out this sentence. If yes, now let's see whether they are capable to produce accurate sounds. So the text isn't important. Objective is more important. Even the objective is the only area of importance behind any activity in which you are using fiction. Got it? जब आप ये हम आपको आइडियलिस्टिक बातें बता रहे हैं, रियलिस्टिक में तो ये है कि अगर आप किसी स्कूल में और यकीनन आप सब सुबह और शाम वाले तो आपको पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो वहाँ तो आपके पास रिसोर्सेज है, you have resources there. If you are a kindergarten teacher, a Montessori teacher, or a grade 1 teacher, you have many resources over there. Like all story books are easily available there because you are teaching in a private school, in a primary school sometime. But when you go to the public sector schools, the government schools, there is no facility available there. There is no. You will have to create story. So before start to create a story, you should know about how to create a story. Which type of text supposed to be used. The fiction text and the skill to use that fiction text, that matters. समझ आ रही है आपको? बेशक आप स्कूलों में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा सब रिसोर्सेज मिलेंगे, लेकिन आपको ये पता हो कि ये मटेरियल बना है ये किस थीम पे बना है, इस थीम पे बना है. हाँ, अगर गवर्नमेंट स्कूलों में आप जॉब है तो वहाँ नहीं मिलता है. बुक्स की जो प्राइवेट में पढ़ाती थी कभी भी आ गए वो तो है नहीं वो नहीं गवर्नमेंट से आती है कभी कभार आ जाती है करता है लाइब्रेरी पीरियड अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है उसकी वजह से ये सब पीरियड में तो लाइब्रेरी बुक्स अवेलेबल है इट वेरी स्कूल टू स्कूल. एक लाइब्रेरी पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चों को यूनिवर्सिटी से बोलना है और रेट करना और हमारे स्कूल में होता है गवर्नमेंट में लाइब्रेरी पीरियड में टीचर्स करते थे. जब मैं पढ़ाती थी प्राइमरी में मैं तो उसको storytelling is in one of the study because but remember one thing, first in initial stages you will have to work with the students separately means you will have to work with the students in different components of reading. Start from phonemic awareness, followed by phonetics or phonics, then you will go to the fluency, after that vocabulary, and not last but not least is comprehension. But when you completed all of these component development through different strategies, as mentioned in book Portrait Reading First, you can incorporate these type of strategies, storytelling. Because in storytelling strategies, you can develop overall reading development, like phonemic awareness, like fluency.
You can check students' fluency. When you provide story books to the students and instruct them to read it aloud or silently, in both, there are two types of reading. Silent reading and read aloud. Both work. As much as they read, their fluency will improve. No rocket science. आप जितना पढ़ेंगे उतनी प्रैक्टिस से आपकी फ्लुएंसी बनेगी. ठीक है? वोकैबुलरी, स्टोरी टेलिंग से वोकैबुलरी डेवलप होगी. क्योंकि स्टोरी टेलिंग में अमूमन यूजुअली जो हमारे डेली रूटीन के वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं. ठीक है? और जब फ्लुएंसी भी है, उसमें वोकैबुलरी भी आ गया, तो एंड ऑफ द डे फिर वो उसको कॉम्प्रिहेंड करना भी स्टार्ट करेगा. कॉम्प्रिहेंशन भी एक ऐसा एक अमल है जो बड़ा नेचुरल अमल है. ठीक है? मैं आपके सामने एक सेंटेंस है. ठीक है? इस सेंटेंस को गौर से सुनिए. इमेजिन कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं. ठीक है? आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन पढ़ा रहे हैं. यू आर रीडर. समटाइम you want to take a step of faith. Sometimes you want to take a step of faith. You need a little nudge. पूरा सेंटेंस आपने सुना? Is there any need to repeat this sentence? Sometimes you want to take a step of faith. You need a little nudge. Nudge. I think you completely understood all the sentences except the last one, the last word. Nudge. But ये जो आखिरी वर्ड है ना, ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल अदर वर्ड्स. मतलब आपके जहन में यही आएगा. मेरी एग्जैक्ट आपको नहीं पता, लेकिन आपका माइंड बोलेगा इसका मतलब ये है. मेरी बात समझ रहे? नट स्पार्क चाहिए, नुक्ता आवाज चाहिए. ठीक है? आपको नहीं पता, लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट, वो जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है ना, वो आपको वो लफ्ज समझा रहा है जो आप नहीं जानते. कॉम्प्रिहेंशन आसान थोड़ी है. आप बच्चों को स्टोरी बुक्स दें 1 महीना, थोड़ी थोड़ी स्टोरी बुक्स, 1 पेज की, 2 पेज की. ठीक है? स्मार्टली डिजाइन स्टोरीज होती है. जाहिर है कि बच्चों के इन्वायरमेंट, उसके किरदार तमाम बच्चों के इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं. प्लस उनकी लैंग्वेज भी बड़ी आसान होती है, वोकैबुलरी बड़ी ईजी होती है, और बड़े स्मार्टली ईजी टू डिफिकल्ट की तरफ जा रही होती है. बड़ी स्मार्टली. आपको फील भी नहीं हो रहा होगा कि उसके पहले पेज से स्टार्ट करता है ना बच्चा, तो वो आखिरी पेज तक इजी टू डिफिकल्ट की अप्रोच पे जा रही होती है. स्मार्टली डिजाइन की गई फिक्शन, ये फ्रीडम मौजूद है, कुछ भी लिखा जा सकता है. 1 महीने के बाद उसे टेक्स्ट बुक पढ़ाइए, आपको उसकी फ्लुएंसी में भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, आपको उसकी वोकैबुलरी में भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, और ये दोनों चीजें मिलकर उसकी कॉम्प्रिहेंशन को भी बेहतर करेंगी. कॉम्प्रिहेंशन का पता कैसे चलेगा आपको? इनिशियल पता कैसे चलेगा? उनके एक्सप्रेशन से पता चलेगा. वो टेक्स्ट जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, उसमें आपके एक्सप्रेशन आए नहीं. जो कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंडेबल होता है वो आपके तासुरात आ रहे होते, आप जब पढ़ रहे होते उसकी रवानी बता रही होती है कि कॉम्प्रिहेंड. शर्त यह कि मेमोराइज ना हो. मेमोराइज अगर है तो फिर इन तमाम चीज़ों फिर ये आप नहीं पता कर सकते कि इसको कॉम्प्रिहेंड. मेमोराइजेशन के वेरिएबल को कंट्रोल कर लें आप उसको. अगर वो रवानी से पढ़ रहा है तो यकीनन कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी. अटक अटक कर पढ़ रहा है तो कॉम्प्रिहेंशन बड़ा से वो इसलिए खामोश रहते हैं कि आपने सिर्फ उसको
जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी एक सेंस इस्तेमाल हो रही है। कौन सी सेंस इस्तेमाल हो रही है? अब ये हेयरिंग जो है वो क्या करती है कि ये आपको जल्दी बोर कर देती है। क्योंकि सर सलमान पढ़ा रहे थे, उस सामने उनको नींद आ गई, उन्होंने थोड़ी देर 5 से 6 सेकेंड नींद लास्ट हो। इस नींद पर काबू पाने का तरीका ये है कि लेट द स्टूडेंट्स एक्टिव, उनको एक्टिव करो। आप उनको स्टोरी दें, फिर उनके ग्रुप्स बनाएं या पेयर बनाएं। अब उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अगर आप ये रिजल्ट चाह रही हैं, यकीनन यही रिजल्ट चाहिए होता है, क्योंकि रीडिंग स्किल का एंड अल्टीमेट रिजल्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। बाकी जो इसकी जो सब स्किल्स है ये इसलिए हैं कि प्रॉपर पढ़े, प्रॉपर बोले, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट बात कॉम्प्रिहेंशन है। तो अगर आपने ओरल लैंग्वेज इज द फाउंडेशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग की क्लास की है, तो आइए उसको जरा कनेक्ट करते हैं इस बात से कि वोकैबुलरी तो हम बच्चे की ओरल लैंग्वेज से डेवलप कर सकते हैं। हम करते क्या है कि हम ह्यूमन वर्ड मीनिंग्स के अंदर वोकैबुलरी को डेवलप करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है ट्रेडिशनल वे में? सपोज एक वर्ड आपने बताया क्लेवर, एन एक्ट ऑफ behave smartly. मैंने देख दिया इसका मतलब, मुझे जो समझ आ रहा है क्लेवर, वो जो आप कह रहे हैं वो ये है जो इससे पहले राइट्स था हमारे यहाँ। वर्ड meaning, words meaning, oh stupid thing. You are going to tell students meaning, actually you are trying to teach both languages parallelly. Clever, chalak. Your task is to teach about English language or in reverse Urdu language, but you are going to tell the students that this is a word belongs to English language and the exact meaning of this word in Urdu language is chalak. Won't learn. This is guarantee. Okay? This most traditional way now is phased out, if I am not wrong. But now, discuss about what is happening in urban areas. This traditional strategy is now replaced by this one, clever. Word meaning in English. If you are teaching English, you provide the meaning of a particular word in English, like clever. Clever person, students should listen. An act of behave smartly. That act is called, that person is called clever. Again, and what is the difference between this activity, this strategy, and this strategy? This approach and this approach. The only one. Here, students had to memorize word in Urdu, but here in English, one thing is common: memorization. How clever you are! Oh, very clever boy, clever girl. बच्चा लफ्ज क्लेवर पर गौर नहीं कर रहा ना, बिल्कुल नहीं देख रहा क्लेवर पे। वो आपके तासुरात को देख रहा है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा है, उससे सीख रहा है कि यार अगर ऐसा करने वाला बंदा वो क्लेवर है।
सुनकर वोकैबुलरी डेवलप कर रहा है, वो मेमोराइज करके करेगा तो वही हाल होगा जो मेरा वाक्य है। ओरल कम्युनिकेशन से ही वोकैबुलरी डेवलप होती है। जब वो ओरल से करेगा ना, अब जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो जब स्टोरी के अंदर आएंगे तो कॉम्प्रिहेंड करेगा। डू यू हैव अ बुक? I think she does not have a book. Okay, doesn't matter. Do you have a book? She does not have a book. Don't you? I think nobody has a book. अब इसमें जो स्ट्रक्चर है ना, do, does, have और has, I think she has a book. Nobody have a book. I think she has a book. Do you have a book? She does not have a book. Do, does, have, has आ गया। ये आपके सुनने से, क्लासरूम के अंदर सुनने से, वो आपके अंदाजे बयां से ही उसको आखिर तक पता नहीं चलेगा हैज कहाँ लगाना है, कहाँ है। वो ऑटोमेटिकली लगाएगा, और जब वो ऑटोमेटिकली लगाने के काबिल हो जाएगा तो जब कहीं पढ़ेगा ना उसको समझ आएगी। पॉइंट क्लियर हुआ कुछ आपका? हम क्या करते हैं, हम इसलिए ये बात करते हैं, पढ़ लिया स्मूथली, एक्यूरेटली, विदाउट एनी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, समवन रेड व्हाट ही वाज गिवन, बट एज यू सेड आई नोटिस दैट व्हाटएवर ही रेड he could not comprehend. Why he could not comprehend? Because of this, as I mentioned, because we did not develop his vocabulary through oral communication. We have tried to develop his vocabulary by words and meaning study, overall vocabulary development. Another example, I know the majority of the students, teachers who are present in this class, the mean in quantity, the mean vocabulary quantity is 1000. आप लोग सब जितने बैठे हो ना, औसतन 1000 अंग्रेजी के अल्फाज आपको पता नहीं, उनके मानी भी पता, लेकिन शायद 30 और 40 असल में आपको पता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 या 40 से ज्यादा की आपने कैपेबिलिटी दी है जिनको आप यूज करें। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से, अंग्रेजी में गुफ्तगू करते वक्त तो 30-40 से आप आगे 42 में जाते नहीं। भाई आपको 1000 कोई ऐसा अल्फाज दे दिए, 1000 अल्फाज दे दूँ और उनसे आगे कहूँ कि इनकी मीनिंग बताओ, आप बता दो। लेकिन जब आप इस्तेमाल की बात आएगी 30-40 से ज्यादा, तो वोकैबुलरी तो है ही वही जिसका आपको इस्तेमाल आता है, ना कि वो जिसको आपने याद किया। ये डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट अगर आप क्लियर हो गया ना, ये पूरी बात समझ में आएगी। वोकैबुलरी वो अल्फाज नहीं है जो आपने याद किए हुए हैं, मेमोराइज किए हुए हैं और आप दावा करते हैं कि मेरे को 1000 अल्फाज। वोकैबुलरी वो अल्फाज है कि जिनका आप विदाउट एनी एफर्टलेसली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तब वो आपका पार्ट ऑफ वोकैबुलरी है। और जो वो अल्फाज जो आप इजीली कर सकते हैं वो आपकी स्पीकिंग में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, आपकी राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। जो हमारी ओरल वोकैबुलरी है, विदाउट एफर्ट हम यूज करते हैं, उर्दू हो या इंग्लिश हो, उर्दू भी सेम ही है। आप उर्दू गुफ्तगू करते हैं तो जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल आप करते हैं वही जब आपको कोई मजमून लिखने को दिया जाए उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ाते हैं, हाँ थोड़ी मिकदार बढ़ जाती है रिटन कम्युनिकेशन में और ओरल में। यहाँ अगर 40-50 अल्फाज आप स्पीकिंग के वक्त बोल सकते हैं या रीडिंग के वक्त समझ सकते हैं, तो उससे तकरीबन 60-65 करने राइटिंग के वक्त आपके आएंगे। लेकिन 1000 कुछ भी फिर भी नहीं करेंगे। तो कोशिश करके देखिए कि आज से शुरू करें, 1 महीने की ब्रेक लगी, रोज जाए डिक्शनरी में एक लफ्ज अपनी पसंद का ज़बानी याद करें, 30 अल्फाज याद हो जाएंगे 30 दिन में।
31वें दिन मैं आपसे पूछूंगा, वो लिस्ट मुझे दें, मेरे सामने पड़ी होगी, मैं आपसे ऐसी गुफ्तगू करूंगा कि आपका रिप्लाई को वो वर्ड आए, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने याद किया होगा, आपका भी जवाब मेरे पास नहीं होगा। लिसनिंग से स्टार्ट होती है रीडिंग, पढ़ना लिसनिंग से स्टार्ट होता है, स्पीकिंग में आता है, रिफ्लेक्ट करता है रीडिंग में, फिर वो राइटिंग में। ये पूरा मैकेनिज्म है। इसमें सबसे बुनियादी बात इंग्लिश में कम्युनिकेशन। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन, हो गया? चले, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आपके पेशेंस का, आपके जेंटलमैन का। फिर आपसे मिलते हैं जुमेरात।